Good morning, students. So today we are starting with a very new chapter, and the name of the chapter is Types of Plants. When we look around, there are so many plants all around, trees, plants, flowers, and it gives so much of freshness. So today's topic is all about plants. So come on, let's start. I would suggest you to sit with your notebooks and pencils so that you can take a note of all the important points. Alright, so let's start. Two important topics that we are going to cover today are types of plants and parts of the plants. So are we ready? Okay, let's get started. Look around you. You will find plants, insects and many other things. So जब आप आसपास देखते हो इतने सारे plants, trees, उन पर छोटे छोटे insects, flowers. Most plants are green in color. Why most of the plants? Not all. Because plants के leaves purple भी होते हैं, yellow भी होते हैं, red भी होते हैं, but most of the time they are green in color. And they are of different shapes and sizes. ऐसा तो नहीं है कि सारे plants छोटे ही हैं या बड़े ही हैं. There are so many plants of different shapes and sizes. Some plants grow very tall and some plants grow very small. Plants are different types. So let's do different types of plants. Number one is trees, पेड़. हम आसपास देखते हैं रोड पर, पार्क्स में, गार्डन्स में, there are so many types of trees. How do we know that a plant in front of us is a tree? It has certain features. Big and tall plants are called trees. जो बहुत बड़े बड़े plants होते हैं, बहुत बड़े बड़े tall और big plants होते हैं, they are called trees. They have strong woody stem which is called trunk. It is very important that tree has a very strong woody branch which is called a trunk. How does a tree look like? A typical tree looks like this. A strong woody stem and it has leaves जो बहुत फैली हुई leaves होती हैं उनके ऊपर. It typically looks like a tree. कुछ trees के examples सोचिए. Mango tree, very good. So some of the examples of the trees are banyan tree, neem, jamun, peepal, coconut trees, mango trees and many more. Now the second type of plant is called shrubs. Trees और shrubs में क्या डिफरेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो प्लांट है वो एक श्रब है और ट्री नहीं है. ये जो shrubs हैं ये plants trees से थोड़ी छोटी हाइट के रहते हैं and they have woody, इनकी भी woody stem है but trees का बहुत मोटा stem होता है और इनका पतला stem होता है. It has thin woody stem and they have many branches. If you can see in the figure, they have many branches and these branches grow close to the ground. तो जैसे ट्रीज इतने लंबे लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, बट जो श्रब्स हैं वो थोड़ी छोटी हाइट के रहते हैं और क्लोज टू द ग्राउंड रहते हैं. एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो शायद आपके घर में, आपके पॉट्स में भी ग्रो कर रहे होंगे वो हैं तुलसी, रोज, कॉटन प्लांट्स, हाइबिस्कस प्लांट. दिस इज अ हाइबिस्कस shrub. It's a hibiscus plant and it's a shrub. All right. So अभी तक हमने two types of plants किए हैं. One is tree and the other one is shrub. Okay. तो अब हम चलते हैं next plants की तरफ. All right. So the third type of plant is called herbs. They are called herbs. So herbs क्या होते हैं? ये shrub से भी छोटी हाइट के प्लांट्स होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो पौधा है, जो प्लांट है वो एक herb है. They have soft stem and इनकी बहुत पतली, बहुत वीक ग्रीन कलर की, मोस्टली ग्रीन कलर की बहुत ही वीक स्टेम होती है. एंड इसके टिपिकल एग्जांपल्स हैं मिंट. व्हाट इज मिंट? पुदीना. स्पिनच, पालक. कोरिएंडर, धनिया. सो ये सब हर्ब्स छोटे छोटे आपकी मदर
डालती होंगी आपके खाने में, धनिया के पत्ते, mint leaves, spinach, palak, which is very rich in iron and it is very nutritious. So herbs are very small plants with thin green stem which are very weak. Now comes the fourth type of plants which are climbers. अब climbers के नाम से ही पता चल रहा है वो plants जो climb करते हैं, जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जो climb करते हैं. Some plants have weak stems and they need support of other plants, walls or stick to stand and grow straight. मतलब कि ये जो plants हैं वो इतने weak होते हैं, इनकी stems इतनी weak होती हैं कि वो अपने आप grow ही नहीं कर पाते. They need some kind of support to grow. How do they grow? So we put a stick in the pot, and when the plant grows, it keeps on climbing like this on the stick with the help of stick. जिस तरीके से हम अपने पैरों से क्लाइंब कर सकते हैं, लिजर्ड अपने पैरों से क्लाइंब कर सकती है, ये प्लांट्स कैसे क्लाइंब करते हैं? अपनी छोटी छोटी रूट्स से. सो ये अपनी छोटी छोटी रूट्स को स्टिक में जमा कर उनके हेल्प से क्लाइंब करते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. There is a typical example of climbers which is found in most of the Indian households, that is money plant. I have 3 money plants in my house and it looks amazing to see that how they climb. And the other one is grapevine. All right, children. So the 5th type of plant is creepers. And again, as the name suggests, they creep along the ground. वो creep करते हैं, रेंगते हैं ग्राउंड पर. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनकी स्टेम इतनी वीक है कि वो किसी सपोर्ट से भी ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो वो सिर्फ ग्रो करते हैं ग्राउंड पर ही. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रीपर्स होते हैं इनके फ्रूट्स काफी बड़े रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे फ्रूट्स भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव बिग फ्रूट्स, बिकॉज वो इतने वीक हैं, वो इतने बड़े फ्रूट्स को ऊपर लेकर चढ़ ही नहीं पाते. सो दैट इज व्हाई दे जस्ट क्रीप अलोंग द ग्राउंड. सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड दे आर कॉल्ड creepers. And what are the examples? Watermelon, a big fruit, watermelon. Strawberry, they are smaller fruits, but then they grow on creepers. Bottle gourd, घिया. घिया पसंद है आप लोगों को? मुझे तो बहुत पसंद है. All right. So bottle gourd, घिया. This is also an example of creeper. So we have covered 5 plants today. Please repeat after me. Trees, shrubs, herbs, climbers, creepers. तो हम बहुत जल्दी इनकी पिक्चर से इनको याद रखेंगे. ट्रीज जो सबसे बिग है, उससे छोटी हाइट पे श्रब्स, उससे भी वीक स्टेम वाले, उनसे भी छोटे हर्ब्स, देन जो क्लाइंब करते हैं क्लाइंबर्स, और जो ग्राउंड पे क्रीप करते हैं क्रीपर्स. Good? Is it clear? All right. So let's scratch our brain and revise a little bit. Coconut is an example of, good, it's a tree. Hibiscus, it has a wooden stem and smaller than tree, so it is a shrub. Mint, I told you mint is a herb. It's pudina with small green weak stems. Grapevine, it grows with the help of some support. It climbs up, so that is why it's a climber. Watermelon, it creeps along the ground and thus it is a creeper. All right. So here we have done with the types of plants. Now we come
to our next topic, that is parts of the plant. जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब मेरी टीचर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड से पार्ट्स ऑफ द प्लांट करवाती थी. So how it goes, you can also do it. So with the actions, okay, what are the parts of the plant? Roots, stem, branches, flowers, fruits. Okay, repeat after me. Roots, stem, branches, leaves, flower and fruits. Okay, so let's do it. We are doing 5 parts of the plants along with their functions, that how do they help the plant to grow. ये 5 parts of the plant जो इतने important हैं और वो किस तरीके से एक plant को help करते हैं बड़ा होने में. The first plant, जैसे ही हमने एक seed डाला, सबसे पहले जो part of the plant grow होता है under the ground, that is its roots. Roots क्या करती हैं? Roots fixes the plant to the ground and takes in water needed by the plant. जो roots हैं वो ग्राउंड के अंदर ग्रो होकर जो ग्राउंड का पानी है, मिनरल्स है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए. अब जो रूट्स है उसने एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब ऊपर के प्लांट में वो कैसे जाएगा? वो जाएगा स्टेम की हेल्प से. तो रूट्स ने एब्जॉर्ब करके स्टेम को सारा वाटर और मिनरल्स पास ऑन कर दिया, और स्टेम क्या कर रही है? इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो सबसे पहले वो वाटर को ऊपर लेके गई और उसने सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, रेस्ट ऑफ द प्लांट में वाटर दिया. और अब लीफ का काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि लीफ एक ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती है. इट इज द किचन ऑफ द प्लांट एंड ग्रीन पार्ट makes the food. It's the kitchen of the plant. You can note it down that leaf is the kitchen of the plant. Okay, then comes the flowers. तब प्यारे प्यारे सुंदर डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स ग्रो होते हैं, और फाइनली फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स, एंड फ्रूट इज अ पार्ट विच हैज सीड्स इन इट. Watermelon has seeds in it, it's a fruit. Mango has a seed in it, it's a fruit. Guava has seeds in it, it's a fruit. Tomato has seeds in it, it's a fruit. So what 5 parts of the plant we have done? Roots, which which absorbs all the nutrients and water. Stem, which transports water to the rest of the plant. Leaves, which makes food for the plant. Flowers, which turn into fruit, which produces fruit, and fruit is that part which we eat and it has seeds in it. So what are the keywords that we have done in today's chapter? Trees, big and tall plants with strong woody stems. Shrubs, these are small plants with woody stems. Herbs, जिसकी और ज्यादा सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं और बहुत छोटे होते हैं. Climbers, plants with weak stem and they need support to grow straight. Creepers, plants with weak stem and they grow along the ground. So, points to reflect. What have we done in today's chapter? Plants are of different shapes and sizes. सारे plants कभी भी एक size और एक shape के नहीं होते. If you look around, plants are of different size and shapes. And based on their size, plants can be grouped into 5 types of plants: trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. And a plant has many parts like root, stem, leaf, flower, fruit. Clear? So did you enjoy the chapter? I enjoyed it thoroughly. I think we are now ready to do some of the exercises of this chapter. So let's get started.
Which of the following is not a herb? Is not a herb. Mint. मिंट की छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं, वीक होती हैं, ग्रीन होती हैं, तो ये डेफिनेटली एक हर्ब है. तुलसी. तुलसी की स्टेम्स वुडन होती हैं, थोड़ा श्रब से बड़ा, थोड़ा हर्ब से बड़ा प्लांट होता है, ट्री से छोटा होता है, तो आई थिंक it is not a herb because it is a shrub. So इसका correct answer है तुलसी. Spinach is also a herb. Next, plants that grow along the ground are called. मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो प्लांट किसी की सहायता से भी नहीं ग्रो कर पाते, किसी की हेल्प से भी नहीं ग्रो कर पाते, वो सिर्फ ग्राउंड पे क्रीप करते हैं. सो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. It needs support to stand and grow. So it climbs with the help of support. It is called climber. Which part of the plant has seeds? Very good. It's a fruit. Let's fill in the blanks quickly. Trees have strong and woody stems called trunk. Have you seen a trunk of an elephant? It is so strong. Similarly, we have a trunk of a tree which is strong and woody, and trees have it. Small plants with woody stems are called shrubs. Herbs have weak stems. It doesn't have a strong stem, it has a weak stem. Dash is the flat green part that makes food for the plant. Which makes food for the plant, kitchen of the plant, that is called leaf or leaves. Let's answer the following questions. Name any two trees. Mango, banyan, neem, etc. Name three animals that live in trees. Very good. Monkey. Birds. You can name different birds. Okay, pigeon, eagle. Very good. Woodpecker also. How are shrubs different from herbs? This I leave up to you because I have explained a number of times now. I want to see how much have you understood. So you are going to differentiate between herbs and shrubs, and you are going to tell me that why do climbers need support to grow straight. Alright? Then name any two creepers. Watermelon, bottle gourd, strawberry. Great. So there are few interesting activity based questions at the back. It will be great if you try this on your own. So you have to look at this diagram and check off the correct stage number next to each picture. So I would want you to perform this activity with your friends, with your parents, with your classmates, and discuss with me later on. And you can also collect different fallen leaves, paste them in your notebook. This is also an activity based. And why not you make a friend, a new friend of yours that's a tree. Okay? And tell that your new friend is a tree or is a herb or a shrub, and how do you know that? Does it have a woody stem or a trunk, or it is creeping around, or it is climbing? So you can just note it down. That's all for today. I hope you enjoyed this session. Keep tuned and keep shining, keep rising. Bye bye.